Hey guys, welcome to my channel. So today I will be talking about mucormycosis or black fungus. So I know a lot of you are trying to understand what exactly this disease is and बहुत सारी मीडिया पोर्टल्स हैं न्यूज़पेपर्स हैं जो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बट टुडे आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहां पर मैं ये सारी नॉलेज को कलेक्टिवली प्रेजेंट कर सकूं. सो एक रीसेंट न्यूज़ है that the black fungus has been declared as an epidemic in Rajasthan yesterday, that is May 19, 2021. So, what exactly are we dealing with, or what exactly is this? So, we are dealing with a group of fungus जिसको हम म्यूकोरमाइसीट्स बोलते हैं. ये जो म्यूकोरमाइसीट्स हैं, ठीक है, ये हमारे बीच हमेशा से प्रेजेंट थे. जो ये ब्रेड मोल्स है या फिर रॉटन एप्पल्स, रॉटन फ्रूट्स, कॉम्पोस्ट सॉइल्स, इन सभी में ये स्पेसिफिक फंगस हमेशा से प्रेजेंट था. ठीक है, बट ये हमारे ऊपर कभी भी पहले असर नहीं कर पाया. आवर बॉडी यूज्ड टू ऑलवेज बी एबल टू फाइट विद दिस. ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी डीलिंग विद? वी हैव 5 टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. राइनोसेरेब्रल मतलब कि नोज एंड ब्रेन. Pulmonary is your lung, cutaneous is your skin, gastrointestinal is your stomach and intestine, and disseminated are rest parts of your body. In COVID-19, we are exactly dealing with rhinocerebral and also pulmonary. तो पहले कभी हमारी बॉडी में ये डिजीजेस नहीं हुए एंड सडनली क्या ऐसा हो जाता है कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर दिखने लग जाता है. सो देयर आर सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस जो प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से a person is liable to get this disease. If a person has any kind of health problems, low immunity, okay, or diabetes mellitus. Now, diabetes mellitus actually means कि uncontrolled diabetes. Uncontrolled diabetes always means कि आपके values 300, 400 से हमेशा ऊपर रहते हैं. So, even if you're taking medicines, they're not coming down. उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट. स्टीरॉयड इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ ड्रग जो कि बहुत यूजफुल होता है, but at the same time, this is very harmful. Harmful because this is going to reduce your immunity. Also, in the cases of cancer and organ transplant, there is a high chance that a person will get this kind of disease. Okay, that's why this disease is called as an opportunistic infection. Now, what is an opportunistic infection? Opportunistic infection is any infection that happens in your body when the immunity of your body is low. So, black fungus or mucormycosis is a such kind of disease. Now, what is the relation with a COVID-19 recovered patient? So, this is your coronavirus. Okay, जब ये बॉडी में अफेक्ट करता है तो पर्सन माइट बी एसिम्टोमेटिक और अ पर्सन माइट बी सिम्टोमेटिक. नाउ एसिम्टोमेटिक यूजुअली मींस माइल्ड टू मॉडरेट और symptomatic case may be moderate to severe. And in moderate to severe cases, a patient is prescribed drugs like dexamethasone. Now, this dexamethasone is a steroidal drug. It is given orally or in the form of IV. ठीक है, बट एंड दिस ड्रग इज एक्चुअली वेरी यूजफुल. बट मैंने आपको पहले भी बोला कि जितना ये यूजफुल होता है उतना ही ये हार्मफुल भी होता है. सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी. नाउ द सेकेंड थिंग कैन बी दैट दिस ह्यूमिडिफायर दैट वी यूज इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें जो वाटर होता है वो क्लीन नहीं होता. ठीक है, सो हियर क्लीन वाटर इन ह्यूमिडिफायर. देन अ थर्ड थिंग कैन बी uncontrolled diabetes. So uncontrolled diabetes like values more than 300 or 400. Okay, and mainly one more thing is a cleanliness present around the patients. Whenever patient is at home, he is good, fit and fine. But when that patient is in hospital, that patient is liable to something that is called as nosocomial infection. So nosocomial infection is basically hospital acquired infection. So these are 3 things that may, or may not predispose to black fungus. So how do you know कि एक बंदे को black fungus है? So there are certain symptoms that you need to understand. See, the first symptom that is going to appear is your nasal congestion or stuffiness, or maybe nasal blockage. अगर हम उसे एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो. सेकेंड थिंग इज कि अगर साइनस के साथ हमेशा हेडेक
रिलेटेबल होता है. सो सेकेंड सिम्टम, यू मे हैव हेडेक, वन साइडेड स्वेलिंग, यू कैन इवन हैव ब्लैक लीजन्स ऑन योर नेजल ब्रिज. नेजल ब्रिज एज इन यहाँ पर अंदर, आप अगर इसके अंदर देखेंगे, देन मे बी blackish lesions, or there can be a black discharge. Okay. Apart from this, you might have facial pain or swelling, one-sided facial pain or one-sided swelling. Pain जो होगा, it will be around here or around the lower portion of your eyes or near your tooth. And if the infection has already reached your eyes, the patient may also has blood vision. There are also certain dental symptoms that I think a dentist might be aware of or should be aware of. There are certain ulcers or any kind of lesions that is present on gums or palate. So, dentists should be able to think that, okay, this can be a sign or an early sign of black fungus, and refer the patient immediately to an ENT or concerned doctor. So how do you prevent it? There are certain do's and there are certain don'ts. Don'ts. Okay, so hyperglycemia. What is an hyperglycemia? Hyperglycemia is your increased blood sugar level. और मैं बार बार आपको ये समझा रही हूँ कि अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. देन इज योर कि आफ्टर यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यू हैव टू मेंटेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है, नर्सेज है जो हमारा ध्यान रखते हैं. बट व्हेन यू कम बैक होम, यू जनरली डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. उसके अलावा डॉक्टर्स शुड ऑलवेज प्रिस्क्राइब स्टीरॉइड्स judiciously. You should use clear and sterile water for humidifiers, and also the patient should be on antibiotic or antifungal treatments. Now there are certain don'ts. What are the don'ts? That you should not miss any early signs and symptoms. आप घर बैठे हैं, आपको सारे symptoms हैं, you are not supposed to miss these symptoms thinking कि कुछ भी है, normal है. Even in the cases of a blocked nose, you should not think कि it can be a bacterial sinusitis, especially तब जब आप एक COVID recovered patient है. ठीक है, you should seek an early treatment. You should never hesitate in seeking an aggressive investigation. और कभी भी there's a crucial time, a crucial early time जब आप बचा सकते हैं खुद को या अपने relatives को. See, I'm not saying कि it is a deadly disease. No, but yes, this disease can cause you to lose your eye or might cause blurred vision. You might lose your vision completely as well. So what to do next? See, you are supposed to seek medical help as soon as possible. You should refer to an ENT or maybe an ophthalmologist, or if you have any dental related issue, to a dentist, right? All the doctors should be aware of this evidence-based advisory in the time of COVID-19. It is for mucormycosis. And the treatment protocol is the usage of amphotericin B. It is a very good drug, a very good antifungal drug that is used for the treatment of mucormycosis. So I think this was it about the mucormycosis. So guys, I really hope that you stay home, stay safe in these COVID-19 times. And of course, if you like the video and if you found it informative, so please like, subscribe and share. Maybe आप किसी को share करेंगे तो definitely किसी ना किसी के काम जरूर आएगी. Till then, take care.